में एक जो सीधी सीधी सूरत नज़र आती है वो ये है कि पहले नैब के कानून में सरकारी मुलाजमीन अगर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी या मैं उसे कहूँगा कि मिस्टेकन यूज़ ऑफ अथॉरिटी करते तो उन्हें नैब पाबंद सलासल कर देता। तरमीम आई है कि जब तक रिश्वत की, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की शहादत नहीं होगी, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी सिंपलिसिटर वुड नॉट बी एन ऑफेंस। और ये अदालत उज़्मा के कई फैसले हैं जो कि इसके ऊपर उन्होंने मुकदमे बरी किए, लेकिन सर उसके लिए आपको 2 साल जेल में रहना पड़ता है। कौन लुटाएगा आपके वो 2 साल जो आपने अपने बच्चों से, अपने ख़ानदान से, अपने घर वालों से दूर गुजारे, जब आपका रोज़गार बंद रहा और वो जो धब्बा लगा आपके माथे पे, बरीयत की खबर आप किस किस को देंगे जब टीवी अखबारों में चला कि आज फलां अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसको सुलाखों के पीछे खड़ा करके हमने वो मनाजर भी देखे कि इंतहाई दयानतदार अफसरान को, क्योंकि वो मुखालिफ सोच रखते थे, उनकी ताबेदारी नहीं थे करते, उन्हें गिरफ्तार करके सुलाखों के पीछे खड़ा करके तस्वीरें मीडिया को जारी की गई। इस कानून में ये तरमीम भी है कि कोई मीडिया कैंपेन नहीं करेगा नैब जब तक मुकदमा फाइनल नहीं हो जाएगा। इस कानून में ये तरमीम भी है कि आप तब तक गिरफ्तारी नहीं करेंगे जब तक ये सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि ये बंदा मुल्क से भाग नहीं रहा, ये बंदा एविडेंस ख़राब नहीं कर रहा और ये बंदा तफ्तीश ज्वाइन नहीं कर रहा। जो तफ्तीश ज्वाइन करे, ये जिम्मेदारी ले, मैं पेश हो रहा हूँ, बाहर नहीं जाऊँगा, उसकी गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी ना हो। क्यों ना ज़मानत दी जाए? अगर दहशतगर्दी के कानून में ज़मानत है, अगर कत्ल के कानून में ज़मानत है, अगर जना बिल जबर के कानून में ज़मानत है, तो नैब कानून में ज़मानत क्यों ना हो? और अदालत उज़्मा ने 3 फैसला जात में कहा कि पार्लियामान ये कानून बनाए कि ज़मानत जिस तरह दीगर शहरियों को है उसी तरह हासिल होनी चाहिए। एक और बड़ा ड्रैकोनियन प्रोविजन था, नैब के पास इख्तियार था कि वो 90 रोज़ तक अपनी तहवील में रख के आम ट्विस्टिंग करे। और इस ऐवान में मौजूद और ऐवान से बाहर मौजूद बहुत सारे ऐसे शुरफा हैं जिनके साथ वो नारवा सलूक किया गया। जनाब चेयरमैन, 90 रोज़ का रिमांड पहली दफ़ा दहशतगर्दी के मुकदमात में इस मुल्क से दूर किसी और मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाया गया जब उस मुल्क में शोरश थी। साइकेट्रिस्ट और तफ्तीशकारों ने कहा कि दहशतगर्दों को डी ब्रीफ करने के लिए उनको उस फेज से निकालने के लिए, जैसे खुदकुश बम्बार तैयार किए जाते हैं, वो ब्रीफ्ड होते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, उनको डी ब्रीफ करने के लिए वक्त दरकार होता है तफ्तीशकारों को, ताकि वो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करें और उनको ठीक करके निकालें। ये कभी नहीं हुआ था कि वाइट कॉलर क्राइम में 90 रोज़ के लिए बंद कर दिया जाए। जनाब स्पीकर, असासाजात के हवाले से बारहा अदालतों ने कहा कि आमदन से ज़ायद असासाजात जुर्म तब बनेंगे जब होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस या उसका बेनामीदार साबित हो जाएगा कि उसने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से वो असासे बनाए हैं। अगर डीसी रेट में कोई फ़र्क है, अगर टैक्स डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हो गई, अगर मेरे जैसे किसी हिसाब के कमज़ोर आदमी से डिक्लेयर करने में गलती हो जाए तो वो जुर्म नहीं है, क्योंकि कानून ये कहता है नो एक्ट इज़ गिल्टी अनलेस माइंड बी गिल्टी। ये चीज़ें सामने रखते हुए मुफस्सल तरमीम इसमें की गई हैं ताकि आज के बाद किसी बेगुनाह को अपनी अना की तस्कीन के लिए, किसी सियासी मुखालिफ को उसके नज़रियात तब्दील करने के लिए, किसी सरकारी अफसर को अपनी मर्ज़ी के काम करवाने के लिए और किसी ना अच्छे लगने वाली शक्ल को सबक सिखाने के लिए ये कानून इस्तेमाल किया जा सकते। हमने ये हलफ लिया जनाब स्पीकर ये आते हुए कि हम पाकिस्तान के आइन के ताबे कानून साजी करेंगे, हम पाकिस्तान के आइन में दिए गए हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। आज इस अकूबत खाने से आप इस 22 करोड़ अवाम में से उन विक्टिम्स को निकालेंगे जो कि कल लाइकली इसका शिकार हो सकते हैं। मैं एक बात बड़े वसूख से, और मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर जब अरकान की अमेंडमेंट्स आई, कल फिर एक मीटिंग हुई, एक एतराज़ उठाया गया। वो सर कहते हैं ना कि जिमें पढ़े या उमें पढ़ावांगे, कि यानी कि अगर डंडे खा के पढ़ाई की है तो डंडे मार के ही पढ़ाएंगे। ये कानून हम तो भुगत चुके, जो यहाँ बैठे हुए हैं उनमें से बहुत सारे भुगत चुके, आप सबको मालूम है, पूरी कौम को मालूम है। ये कानून सबके लिए यकसा है। जिन्होंने भुगतना था वो इसका फल खाएंगे, जिन्होंने मुख्तलिफ मंसूबों में खराबियाँ की हुई थी, हम कहते हैं वो भी कानून और इंसाफ के मुताबिक डील हों। अगर हमारे साथ सख्तियाँ हुई हैं
तो आने वालों के साथ ना हो, उन्हें आईनी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। तो इस स्पिरिट के साथ ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है। जो बात मैं फिर दोहराऊंगा, मुझे खुशी इस बात की है, मुझे सर ताजर है, सियासतदान है, सरकारी मुलाजिम है, बैंकर है, आम शहरी है, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है सर। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने उन अरकान नेशनल असम्बली को जिन्होंने आज इसमें अमेंडमेंट्स पेश की। सारे हैं जी, हमने देखा, हमने तो उस्तादों को हथकड़ियाँ लगते हुए देखा, हमने लोगों को खुदकुशियाँ करते हुए देखा। और जनाब स्पीकर, ये बात फिर मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे करूँगा कि आज तक अदालत उज़्मा ने जितनी दफ़ा इस पार्लियामान को कहा कि ये शिक दुरुस्त नहीं है, आप इसका जायज़ा लें, ये दुरुस्त नहीं है, इसका जायज़ा लें, और जिन जिन शिकों को उन्होंने जिस तरह से तशरीह की, इनको ऐन उस मुताबिक इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और वो पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने मेहनत की है, अर्करेजी के साथ आज अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, वो भी तहसीन और सताइश के लायक है। बहुत शुक्रिया जी। नो, कौन मूव करे? लॉ मिनिस्टर जनाब आजम तारर साहब, प्लीज मूव दिस नंबर 8, आइटम नंबर 8. The Honourable Speaker, now I wish to move the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, to be taken into consideration at once. जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब. शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, वज़ीर क़ानून ने बहुत तफसील से बात की और होना भी चाहिए था, लेकिन इसमें सबसे पहली बात, जो पहला नुक्ता है, वो ये है कि हकीकत ये है कि इस बिल के बारे में मुझे कम अज़ कम, मैं कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान का मेंबर हूँ, मुझे इल्म नहीं है कि इसमें क्या है और इस वक्त मैं इसको कैसे देख सकता हूँ, इसमें कैसे अमेंडमेंट ला सकता हूँ, ये कहाँ पेश हुआ और स्टैंडिंग कमेटी में कब गया, ये मुझे अभी तक पता नहीं है. इसको भी एक वो वजाहत कर दें कि कब ये पेश हुआ था और इस पर अमेंडमेंट लाए गए. नंबर 1. दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत. ठीक है, अगर इसमें खराबियां थी, 2002 में एक डिक्टेटर ने इस कानून को बनाया था, लेकिन 2008 के बाद वो डिक्टेटर तो नहीं थे. इस कानून को आप ही लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया. उस वक़्त कम अज़ कम आपको सोचना चाहिए था कि चोर दोनों तरफ से हों, जहां भी हो, उनका एहतसाब होना चाहिए और जो लोग बेगुनाह हैं उनको जुल्मन सिर्फ इस वजह से कि उस पार्टी के ताल्लुक़ नहीं है, उनको ज़ोत-कोब नहीं करना चाहिए था. जनाब स्पीकर, वो हो गया और ये नारा नहीं लगना चाहिए कि मेरा चोर जिंदाबाद, तुम्हारा चोर मुर्दाबाद, बल्कि जो भी कौमी ख़जाने के साथ खेल खेले, जो भी इस मुल्क के साथ नारवा सलूक करे, जो भी कौमी अमानतों को नुकसान पहुँचाए, वो चाहे जिस पार्टी से भी हो, चाहे वो सरकार से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा उसको देनी चाहिए. जनाब स्पीकर, मैं यहाँ ये अमेंडमेंट लाऊंगा, तरमीम लाऊंगा कि देखें हम इस्लाम की तरफ क्यों नहीं जाते. इस्लामी कवानीन में जनाब वज़ीर आज़म साहब, इस्लामी कवानीन में तो यह है कि मुस्लिम को जब तक इल्ज़ाम साबित न हो जाए उसको सज़ा नहीं दी जा सकती. अगर हम इस्लामी कवानीन को अपना लें, चाहे वो जिस शुबे से भी उसका ताल्लुक़ हो, इस्लाम तमाम लोगों को रिलीफ भी देता है, उनके हुकूक का मुहाफिज भी है
और उनके साथ किसी भी शुबे में जुल्म और ज़्यादती होने नहीं देता। लेकिन इस्लाम का नाम हम नहीं ले रहे हैं और उन कवानीन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। चाहिए तो ये था कि इस सिलसिले में, नेब के कवानीन के सिलसिले में, हम इस्लामी कवानीन का मुतालिया करते। उसमें जो मशाहिर उलमाए किराम हैं, मुमताज़ उलमाए किराम हैं, उलमा शयूख़ुल कुरान शयूख़ुल हदीस हैं, जो कुरान और सुन्नत को जानते हों, कानून को जानते हों, और उनसे हम मशवरा ले लेते और इस बिल को मज़ीद इसमें निखार पैदा करते, बेहतरी इसमें लाते और इस बिल को इस कौमी असम्बली में पेश करते। तो आज आप इन मौजूदा हुकूमत, यह हकीकत यह है कि आवाम के दिलों में हुक्मरानी करती। जनाब स्पीकर, ये जो लाया गया है इसमें भी हमने तरामीम पेश की थी, मैंने तरामीम पेश की थी। हम हर इदारे को मजबूत देखना चाहते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन इस्लामी हुदूद और क़ुयूद के अंदर रहते हुए अंग्रेजों के कानून में आपको कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप इंसाफ चाहते हैं कि मुझे भी इंसाफ मिले और पोजीशन को भी मिले, हुक्मरान को मिले और राया को भी मिले, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे वो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हो, अगर हम ये चाहते हैं तो यकीनन वो सिर्फ एक इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई भी हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। तो मेरा इस वक्त सजेशन यह है कि इस बिल को भी जल्दी मत कीजिए। थैंक यू। इसको मुतारफ कीजिए, मुतारफ कीजिए। मौलाना साहब का माइक खोलें। मौलाना साहब बात कर रहा हूँ। क्विकली जी, आप प्लीज। नहीं, मैं तो देखें, मैं तो टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, इधर उधर जी नहीं प्लीज, जाना। यू हैव द माइक। तो मेरा कहने का मकसद यह है, मैं बात करूंगा फिर आप मैं बात करें। एक सेकंड, जनाब खालिद हुसैन मगसी साहब, माइक दे खालिद हुसैन मगसी साहब। वो मेरा अर्ज था आपको कि कोई खैर का काम कर देना, जो आपको रिक्वेस्ट किया था सर, ठीक है ना सर? तो मैंने आपको याद दिलाया सर, खैर का काम है, कर लेना। कल मैंने आपको याद दिलाया था सर, बस। थैंक यू। बस जी मौलाना अकबर चित्राली साहब जी, तो हम तो वाइंड अप। देखें, इस्लाम का नाम ले रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि खैर का काम, इससे बेहतर खैर का काम कोई हो सकता है? शुक्रिया कि इस असेंबली में आपका पॉइंट आ गया। शुक्रिया। देखें जी, मैं इस पे मुख्तसर स्टेटमेंट देते हैं। थैंक यू, आपका हो गया। जनाब गौस बख्श महर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, मैं तो काफ़ी चीज़ें मौलाना साहब की इंट्रोस करता हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये एहतसाब सेल मुशर्रफ साहब से पहले आया था। मुशर्रफ साहब के बाद 5 साल आपकी हुकूमत रही, 5 साल मियाँ साहब की हुकूमत रही। तो जब ये चीज़ ख़राब है, उसमें गलतियाँ खराबियाँ हैं, तो उसको अमेंडमेंट क्यों नहीं लाया गया? NRO की वजह से बंद किया गया, क्या हुआ? बिल्कुल ये काला कानून है, काफ़ी लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। मैं इसको अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सपोर्ट करें, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि हमें अगर ये लॉ मिनिस्टर बड़े अच्छे आदमी अगर कंसल्ट कर लेते हैं तो हम इसमें स्टेटमेंट देते हैं कि हम कहते हैं कोई भी चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं होगी। क्यों नहीं करप्शन पर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर इस्लामी सज़ा जो है, शरीयत सज़ा जो है, वो क्यों नहीं ले आते अमेंडमेंट करके, और जिसमें सबका बोझ उतर जाएगा और सब खुद जिसने बनाया उसने ही हमारे लिए कोई चीज़ें बनाई है, ये हमारे बेहतरी के लिए ठीक है, उसे बनाने के और कोई ठीक नहीं कर सकता है। गाड़ी जो बनाता है उसको ज़्यादा पता होता है गाड़ी में क्या खराबी है, कैसे ठीक हो। जिसने इंसान को बनाए उस खालिक को हमारा पता है कि हमारे इल्म जुएन के लिए कहाँ कहाँ खराबी है, कहाँ कहाँ को ठीक करें। क्यों नहीं हम शरीयत को ले आते? इतने मौलाना साहब बैठे हैं, वर्जी बैठे हैं, इतने अरसे दे रहे हैं, क्यों नहीं वो भी इस चीज़ को आगे ले आके अमेंडमेंट करके इसको शरई कानून के मुताबिक सज़ा जो हो क्राइम पर, क्रिमिनल पर ले आए, तो मेरा ख्याल मुनासिब होगा। और एक पाकिस्तान में गवर्नमेंट की भी सराह होगी, गवर्नमेंट की तारीफ़ होगी। और ये फिर जो हैंकी पैंकी हम होते हैं
हाउस में लोगों को आगे पीछे करना, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने बने से भी बच जाएंगे। सब खुदा के इतने नाम ऊपर लिखे हुए हैं, इस पर सब लोग इस पर जाएंगे। मेरी अमेंडमेंट इसमें ये है कि इसमें शरई कानून जो है उस मुताबिक शरीयत मुताबिक जो सजा है वो देनी चाहिए। थैंक यू। कादर खान मंदोखेल साहब। जनाब स्पीकर, तारड़ साहब की तरह मुझे भी 28-29 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए। ये जो काला कानून आया और यही वजह बताई गया है कि करप्शन को ख़त्म करना है। मैं कहता हूँ करप्शन ज़्यादा हो गई है। करप्शन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नैब की अफसरान की तरफ से हो गए। मैं ऐसे ऐसे केसेस आपको बता सकता हूँ जहाँ करोड़ों रुपए के लूटमार हो, वहाँ उन्होंने पर्दा रखा। जहाँ एक ऑफिसर या एक पॉलिटिशियन लाख-1.5 लाख रुपए के करप्शन उसके ऊपर इल्ज़ाम हो, उसको कई साल तक जेल में रखा गया। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे कानून पाकिस्तान में जो कानून मौजूद है शायद अमेरिका में मौजूद ना हो, मगर क्या वजह है कि बदनीयती की बिना पे अपोजिशन को, मुखालफिन को रगड़ा देने के लिए ऐसा काला कानून लाया गया जिसमें आपके बेल भी नहीं है, आपको लवाकिन से मिलने की वो भी नहीं है। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ जो जजेस साहिबान उसमें आते हैं वो आते हैं या तो रिटायर्ड जजेस होते हैं या हुकूमत के मनपसंद जजेस होता है, जहां उनको रिलीफ मिले, जहां वो इशारा करे इसको सजा देना है, जहां उसको इशारा करने इसको रिलीफ देना है, वो जजेस आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है जनाब आला कि इस कानून को मैं तो ये कहता हूं सिरे से इसको खत्म होना चाहिए, इस वजह से कि पाकिस्तान में एक से एक कवानीन मौजूद है, चाहे करप्शन के ऊपर हो, चाहे जिना के ऊपर हो, चाहे दहशतगर्दी के ऊपर हो, मगर क्या वजह है कि एक स्पेशल कानून एक लिया जाएगा। और फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यह स्पेशल कवानीन सिर्फ अपोजिशन को, मुखालफिन को रगड़त देने के लिए। मैं आपको एक एक नेब अफसरान का नाम बता सकता हूं जिन्होंने करोड़ों रुपए के असासजात बनाए, जिन्होंने इतना माल बनाया कि शायद किसी मिनिस्टर, शायद किसी हुक्मरान ने बनाया हो, जो नेब के अफसरान ने बनाया होगा। तो नेब का चेयरमैन, जो नेब के चेयरमैन के बारे में भी यह कहूंगा कि ये वही चेयरमैन है, ये वही चेयरमैन है जब वकला मुआज चल रहा था, चीफ जस्टिस की बहाली के लिए तहरीक चल रही थी और उन्होंने यूटर्न मार दिए और बताया गया कि मेरे पास बच्चों की फीस नहीं है। और फिर उसके बाद जब ये मूवमेंट हम लोगों ने और पीपल्स पार्टी और तमाम जो इस वक्त कौमी हुकूमत मौजूद है वहां कामयाब हो गई, तो वापस जम मार के और सीरियल नंबर 1 पे आने की कोशिश। तो मेरा कहना है जनाब आला कि इसमें तरमीम तो जरूर होना चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा बेल की ऑप्शन होने चाहिए। बेल अगर यूरोप को आप देख ले, अमेरिका का कवानीन को देख लो, वो पहले तफ्तीश होती है और सब ज्यादा मुल्जिम को बेल दी जाती है। बेल का मकसद ये नहीं होता है कि वो बरी हो गया, बेल का मकसद ये है कि वो अपने सफाई में कुछ कह सके। तो मेरी गुजारिश है जो लॉ मिनिस्टर साहब ने जो अमेंडमेंट इसमें, जो हमारे साथियों ने अमेंडमेंट इसमें पेश किए, बिल्कुल सही है, इसको फौरी तौर पर नाफिज होना चाहिए, पास होना चाहिए, ताकि मैं आज अगर हम हुकूमत में है, कल अपोजिशन वाले उनके साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, न किसी ब्यूरोक्रेट के साथ जो करप्शन में मुलव्वस नहीं है उसके साथ ज्यादती होनी चाहिए। और अगर इसी तरह ज्यादती चलती रह गई है तो हुकूमत की मशीनरी, अफसरान कोई काम करने को तैयार नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। मिनिस्टर साहब, डू यू वांट टू से समथिंग? नहीं सर, सिर्फ एक बात है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स हैं तो टाइम थोड़ा लगेगा। एक बात जो उन्होंने कहा ना रिटायर्ड जजेस, वो हमने निकाला है सर, जजेस लगेंगे चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट की तरफ से, ताकि वो बिल्कुल सर्विंग जज होंगे, आज़ादी से, खुद मुख्तारी से काम करें। हम इस निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, हम कोई NRO नहीं लेना चाह रहे, ना लेना चाह रहे हैं, ना देना चाह रहे हैं। और जो बाकी तहफ़्फ़ुज़ात है वो सारी अमेंडमेंट्स मेरी नज़र से भी गुजरी हैं। कल चित्राली साहब ने कहा कि ये दिखाया नहीं गया, सर इसकी टाइमलाइन बता देते हैं। ये 8 नवंबर 2021 को ले किया गया और कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी ने काफ़ी टाइम लिया लेकिन प्रोग्रेस नहीं हुई इसमें। बार कैफ 23 मई को ये यहाँ पे सर ले की गई थी रिपोर्ट, और उसके बाद ही इसमें कोई 24-25 अमेंडमेंट्स आई हैं। मेरे ख्याल में चित्राली साहब की वो नज़र से नहीं गुजर सका, शायद अगर होता तो ये भी डाल देते। चित्राली साहब, आईने पाकिस्तान के तहत ये पार्लियामान कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि इस्लामी कवानीन के मुनाफी है। इसमें कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है, इसमें कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है इवन अमेंडमेंट्स के बावजूद जो कि इस्लाम से मुनाफी हो। नीयतें साफ़ हों तो इंशाल्लाह सफ़र आसान हो जाते हैं। मैं गुजारिश करूँगा सर के इसको टेकअप किया जाए, आगे अमेंडमेंट्स भी हैं। Now I put the motion to the House.
it has been moved that the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2 amendment. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq, MNAs. Now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. Thank you very much, Honorable Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 1, for Subclause 2, the following shall be substituted and shall always be deemed to have been so substituted, namely, this Act shall come into... Clause 2 में करें से. This Act... Please. This is clause... This is Clause 1 हम लेंगे आखिर में. आप Clause 2 को करें. इसमें amendment पढ़ें आप. I wish that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee for Clause 2, the following shall be substituted, namely, in the National Accountability Ordinance 99, hereinafter referred to as the Ordinance for Section 4, the following shall be substituted, namely, application. This ordinance extends to the whole of Pakistan and shall apply to all persons, including those persons who are or have been in the service of Pakistan, except persons and transactions specified in subsection 2. Now subsection 2. The provisions of this ordinance shall not be applicable to the following persons or transactions, namely, A. All matters pertaining to federal, provincial or local taxation, other levies or imposts, including refunds or loss of exchequer pertaining to taxation. Clause B. Decisions of federal and provincial government, cabinet, decisions of federal or provincial cabinet, their committees or subcommittees, Council of Common Interest, CCI, National Economic Council, NEC, National Finance Commission, NFC, Executive Committee of the National Economic Council, EACNIC, Central Development Working Party, CDWP, Provincial Development Working Party, PDWP, Departmental Development Working Party, DDWP, the State Bank of Pakistan, and such other bodies, except where the holder of the public office has received a monetary gain as a result of such decision. Now moving to subclause C. Any person or entity who or transaction in relation thereto which are not directly or indirectly connected with the holder of a public office, except offences falling under clause 9, 10, 11 and of subsection A of section 9. Clause D. Procedural lapses in performance of any public or governmental work or function, project or scheme, unless there is evidence to prove that a holder of public office or any other person acting on his behalf has been conferred or has received any monetary or any material benefit from that particular public or governmental work or function, whether directly or indirectly on account of such procedural lapses, which the said recipient was otherwise not entitled to receive. Clause E. In a decision taken, an advice, report or opinion rendered or given by a public office holder
or any other person in the course of his duty, unless there is a sufficient evidence to show that holder of public office or any other person acting on his behalf received or gained any monetary or other material benefit from that decision, advice, report or opinion, whether directly or indirectly, which the said recipient was otherwise not entitled to receive. And F, all matters which have been decided by or fall within the jurisdiction of a regulatory body established under federal or provincial law. Section 3. Upon the National Accountability Second Amendment Ordinance 2021 coming into force, all pending inquiries, investigations, trials or proceedings under this ordinance relating to persons transferred to concerned authorities, departments and courts under respective laws. कौन सी वाली? Now moving number 3. ये फोर्थ लाइन दोबारा पढ़ें. Fourth line सब clause की या 3 की? क्लास 3 की. Clause 3 की? जनाब स्पीकर, इसकी fourth line substitution of section substitution. No. Upon the National Accountability Second Amendment Ordinance 2021 coming into force, all pending inquiries, investigation, यहाँ से शुरू करें. जी. Which you missed. मैं ये शुरू से पढ़ता हूँ. आज शुरू से पढ़ दें. जी. Upon the National Accountability Second Amendment Ordinance 2021 coming into force, all pending inquiries, investigations, trials or proceedings under this ordinance relating to persons or transactions mentioned in clause A of subsection 2 shall stand transferred to the concerned authorities, departments and courts under the respective laws. Thank you. Okay. Minister of Law and Justice, do you oppose it? Sir, I don't oppose that. We have vetted this amendment. We have received the advance copy. It is in line with the recommendations earlier made by the parliamentarians. Now, I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that amendment as moved by be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 2 as amended stands part of the bill. Clause 3. There is an amendment in clause 3 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now, I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by a standing committee, for clause 3, the following shall be substituted, namely, in the ordinance for section 5, the following shall be substituted, namely, in the definitions, in this ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context. Clause A, accused shall mean a person in respect of whom there are reasonable grounds to believe that he is or has been involved in the commission of any offence triable under this ordinance or is subject of an investigation or inquiry by the National Accountability Bureau or any other agency authorized by National Accountability Bureau in this regard under this ordinance. Clause B, appropriate government means in relation to any person serving in connection with the affairs of the Federation,
including any person employed by a corporation, body, financial institution, bank, authority, undertaking, or any other organization set up, controlled, or administered by or under the authority of the federal government, and in other cases, the provincial government or the local government concerned. Clause C. Asset includes all kinds of property owned by or belonging to an accused or held as benami, whether within or outside Pakistan. D. Associate means any person who is or has been managing the affairs of or keeping accounts for the accused, or who enjoys or has enjoyed any benefit from the assets. Subclause 2. Any association of persons, body of individual partnership, firm or private limited company within the meaning of the Companies Act 2017, of which the accused is or has been a member, partner or director, or which has been promoted, floated, established or run by the accused, whether singly or jointly with other persons. Subclause 3. A trustee of any trust declared by the accused, or which the accused is also a trustee or a beneficiary, and 4. A benamidar. Subclause D-A. Benamidar. Benamidar means a person who ostensibly holds any property of an accused on his behalf for the benefit and enjoyment of the accused. Explanation: a property shall only be held as benami property when the accused has paid the consideration of the property and holds title documents and possession of the property with the intention and object of executing a benami transaction. Subclause E. Chairman National Accountability Bureau means a person who is appointed as such by the federal government as mentioned in section 6B hereafter. Subclause F. Code means the Code of Criminal Procedure 1898. Clause FA. Conciliation Committee means the Conciliation Committee constituted under section 25A. Subclause G. Court means accountability code established under section 5A of the ordinance. Subclause H. Judge means a judge appointed or deemed to have been appointed under section 5A of this ordinance. J. Subclause J. Deputy Chairman National Accountability Bureau means the person appointed as Deputy Chairman of the National Accountability Bureau by the federal government. Subclause K. National Accountability Bureau means the bureau set up and notified under this ordinance hereinafter referred to as NAB. Subclause L. Freezing includes attachment, sealing, prohibiting, holding, controlling or managing any property either through a receiver or otherwise as may be directed by the court or Chairman NAB, and in case it is deemed necessary, the disposal thereof by sale through auction or negotiation subject to confirmation by the court or by Chairman NAB as the case may be after public notice. Subclause M. Holder of public office means a person who, subclause 1, has been the President of Pakistan or the Governor of a province. Subclause 2, is or has been the Prime Minister, Chairman Senate, Speaker of the National Assembly, Deputy Speaker National Assembly, Federal Minister, Minister of State, Attorney General, and other law officer appointed under the Central Law Officers Ordinance 1970. Advisor to the Prime Minister, Special Assistant to the Prime Minister, Federal Parliamentary Secretary, Member of Parliament, Auditor General, Political Secretary, Consultant to the Prime Minister, and holds or has held post or office with the rank or status of a Federal Minister or Minister of State. Subclause 3 of M. Subclause M. Is or has been the Chief Minister
Speaker Provincial Assembly, Deputy Speaker Provincial Assembly, Provincial Minister, advisor to the Chief Minister, Special Assistant to the Chief Minister, Provincial Parliamentary Secretary, Member of the Provincial Assembly, Advocate General including Additional Advocate General, Assistant Advocate General, Political Secretary, Consultant to the Chief Minister, and who holds or has held a post or office with the rank or status of a Provincial Minister. Subclause 4 is holding or has held an officer or post in the service of Pakistan or any service in connection with the affairs of the Federation or of a province or of a local council constituted under any federal or provincial law relating to the constitution of local councils, cooperative societies, or in the management of corporations, banks, financial institution firms, concerns, undertakings, or any other institution or organization established, controlled, or administered by or under the federal government or provincial government other than a person who is member of any of the armed forces of Pakistan, except a person who is or has been member of the said forces and is holding or has held a post or office in any public corporation, bank, financial institution, undertaking, or other organizations established, controlled, or administered by or under the federal government or provincial government, or notwithstanding anything contained in Pakistan Army Act 1952 or any other law for the time being in force, a person who is a civilian employee of armed forces of Pakistan. Clause 5. Has been the chairman or vice chairman of a Zilla Council, a municipal committee, a municipal corporation, or a metropolitan corporation constituted under any federal or provincial law relating to local councils. Subclause 5A. Is or has been a district Nazim or Naib Nazim, Tehsil Nazim or Naib Nazim, or Union Nazim or Naib Nazim. Explanation. For the purpose of this subclause, the expression chairman and vice chairman shall include mayor and deputy mayor, as the case may be, and the respective councillors therein, and subclause 6 has served in and retired or resigned from or has been discharged or dismissed from the armed forces of Pakistan. Now clause N. Offence means the offences of corruption and corrupt practices and other offences as defined in this ordinance, and includes the offences specified in schedule to this ordinance. Clause O. Person, unless the context otherwise so requires, includes in the case of a company or a body corporate the sponsors, chairman, chief executive, managing directors, elected directors, by whatever name called, and guarantors of the company or body corporate, or anyone exercising direction control of the affairs of such company or a body corporate, and in the case of any firm, partnership, or sole proprietorship, the partners, proprietor, or any person having any interest in the said firm, partnership, or proprietorship, concern, or direction, or control thereof. Clause OA. Private person. Private person shall mean any person other than holder of public office. Subclause P. Clause P. Property. Property includes any or all movable and immovable properties situated within or outside Pakistan. Clause P. Clause PA. Public at large means at least 100 persons. Clause Q. Government property means property belonging to the government and includes gifts, donations, financial assistance, grants, aid received or controlled, or aid received or collected in whatever name or for whatever purpose by a holder of public office during tenure of office, and clause R, willful default
willful default. A person who or a holder of public office is said to commit an offence of willful default under this ordinance if he does not pay or continues not to pay or return or repay the amount due from him to any bank, financial institution, cooperative society, government department, or a statutory body, or any authority established or controlled by a government on the date that it became due as per agreement containing the obligation to pay, return or repay, or according to the laws, rules, regulations, instructions issued or notified by the State Bank of Pakistan or the bank, financial institution, cooperative society, government department, statutory body, or any authority established or controlled by a government, as the case may be, and a 30 days notice has been given to such person or holder of public office. Provided that it is not willful default under this ordinance if such person or holder of public office was unable to pay, return or repay the amount as aforesaid on account of any willful breach of agreement or obligation or failure to perform statutory duty on the part of any bank, financial institution, cooperative society, or a government department, statutory body, or any authority established or controlled by government. Provided further that in the case of default concerning a bank or a financial institution, a 7 days notice has also been given to such person or holder of public office by the Governor, State Bank of Pakistan. Provided also that aforesaid 30 days or 7 days notice shall not apply to cases pending trial at the time of promulgation of the National Accountability Amendment Ordinance 2001. Minister for Law and Justice, do you oppose it? No, we have examined, sir. I've gone through it. We have no objection. Right. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 3 as amended stands part of the bill. There is an amendment in clause 4 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. Speaker, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by Standing Committee for Clause 4, the following shall be substituted, namely, in the ordinance substitution of Section 5A Ordinance of 1999, in the ordinance for Section 5A, the following shall be substituted, namely, Minister, 5A. I'm moving it. yes, please. I'm still read continuing, it out. Honorable Speaker. 5A, term of a judge. A judge of a court who is serving district and session judge shall ordinarily hold office for a term of 3 years from the date of his initial appointment as such judge. A judge shall not be removed or transferred from his office before the completion of the term with his office without consultation of the Chief Justice of the High Court concerned. Minister of Law and Justice, do you oppose it? In order to ensure that the independence of judiciary is never compromised and the government should never actually control the judges. Now Don't I oppose put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 4 as amended stands part of the bill. Clause 5.
There is an amendment in clause 5 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Ranja to move the amendment. Honorable Speaker, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by a standing committee, in clause 5 for the proposed subsection B of section 6, the following shall be substituted, namely, clause B, Chairman National Accountability Bureau. Clause 1, subclause 1. There shall be a Chairman National Accountability Bureau to be appointed by the federal government after consultation between Leader of the House and Leader of the Opposition in the National Assembly, provided that the consultation between the Leader of the House and Leader of the Opposition shall be initiated 2 months prior to the expiry of the term of outgoing Chairman and shall be concluded within the period of 40 days. Clause 2. If there is no consensus on the name of the Chairman, the name... 45 days, please correct it, Ranja Sahab. 45 days. Yes. Within the period of 45 days. Shall be concluded within the period of 45 days. Yes. Clause 2. If there is no consensus on the name of the Chairman, the names proposed by the Leader of the House and the Leader of the Opposition shall be forwarded by the Chairman of the Senate and Speaker of the National Assembly, as the case may be, to the Parliamentary Committee appointed under Clause 3, which may confirm any one name for appointment as Chairman, provided that Leader of the House and Leader of the Opposition shall propose 2 names each for consideration of the Parliamentary Committee. Clause 3. The Parliamentary Committee under Clause 2 shall be constituted by the Speaker, National Assembly, comprising 50% members from the Treasury benches and 50% members from the opposition benches based on their strength in Majlis Shura Parliament, to be nominated by the respective parliamentary leaders. Provided that Parliamentary Committee shall recommend the name of the Chairman not later than 30 days. Clause 4. The total strength of the Parliamentary Committee shall be 12 members, out of which 1/3 shall be from the Senate. If the National Assembly stands dissolved at the material time, all members of the committee shall be from the Senate. Clause 5. The Chairman shall, on such terms and conditions as may be determined by the federal government, hold office for a non-extendable term of 3 years and shall not be eligible for subsequent appointment as Chairman and shall not be removed from office except on the grounds in the manner as provided in Article 209 of the Constitution. Provided that upon the expiry of the term of Chairman and till the appointment of the new Chairman, the Deputy Chairman shall act as Chairman, and in his absence, Federal Government shall appoint an acting Chairman from among the senior officers of the NAB. Clause 6. The Chairman may, by writing under his hand, addressed to the Federal Government, resign from his office. I conclude. Minister for Law and Justice, do you oppose it? सर मैंने ये अमेंडमेंट देखी है, अच्छा किया है इन्होंने कि एक मैकेनिज्म दे दिया। पहले जब इत्तफाक राय लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर ऑफ हाउस में नहीं था होता तो एक अजीब सूरत हाल होती थी। दूसरा एक और अच्छी चीज़ है कि इन्होंने मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस की रोशनी में फेडरल गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली द इलेक्टेड बॉडी, आपकी जो है इख्तियार उसका अपॉइंटमेंट क्या है वो प्रेसिडेंट की बजाय, वी डोंट अपोज इट जी। Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Ranja to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 5 as amended stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 5A standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS.
Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Ranja to move the amendment. Shahida Akhtar Ali Sahiba. I stand corrected. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity. Before I going to move the amendment in this clause, can you allow me just for a couple of minutes, sir? Thank you. Speaker, जब भी कोई मसवदा पेश किया जाता है, जब तक उसकी इफेक्टिवनेस उसकी तब पता चलता है जबकि उसका हम प्रैक्टिकली इम्पैक्ट देते हैं। हमारे कायद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब शुरू दिन से ये मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं कि ये एक आमिर का लाया हुआ मसवदा है और ये इंतकामी तौर पे इस्तेमाल होगा अपोजिशन के ख़िलाफ़, और उनके विज़न की मैं दाद देती हूँ और सब उसके गवाह हैं कि आज हम देख रहे हैं कि किस तरह इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने वो अपोजिशन। जनाब स्पीकर, हर कानून के मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं और यहाँ पे इस कानून को हमने बहुत ही गलत तरीके से इसका इस्तेमाल देखा। हम चाहते थे कि ये कानून सिरे से ख़त्म ही कर दिया जाए, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ जो कि इस वक्त कौमी हुकूमत बनाए हुए हैं, उनकी मशावरत से इसमें तरामीम की गई हैं। तो हम एट द मैक्सिमम तो ख़त्म करने के बारे में हमारी राय थी, लेकिन एट द मिनिमम तरामीम के हाथ पे हमने इसमें तरामीम दी हैं। आपने देखा है जनाब स्पीकर कि नैब के कवानीन को पिछली हुकूमत ने, जो कि इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत थी, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने शख्सी बुनियाद पे इस कानून का जिस तरह इस्तेमाल किया गया, जिस तरह एक शख्सियत को मद्देनज़र रख के ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लेके आए। कोई भी कानून जब बनता है तो उसमें ही शी किसी का जिक्र नहीं होता, वो कानून होता है, वो सब पे लागू होता है और सबके लिए बराबर होता है। तो इन तजादात को देखते हुए हमने भी इसमें तरामीम दी हैं जो कि यहाँ पे अब आपके सामने पेश की जा रही हैं। ये मेरी जमात का मौक़िफ़ था जो कि पेश करना इंतहाई ज़रूरी मैंने समझा है। शुक्रिया जनाब। मिनिस्टर फॉर प्लीज पेश कीजिए। सर, I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 5, the following new Clause 5A shall be inserted, namely 5A, amendment of Section 7 Ordinance Roman 18 of 1999. In the ordinance in Section 7, in subsection A for the word President, the word federal government shall be substituted. Thank you, sir. Minister for Law and Justice, do you oppose it? सर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, मैंने एग्जामिन किया था, क्योंकि एक उन्होंने सब्स्टिट्यूशन सारों ने बैठ के शायद ये अमेंडमेंट्स देखी हैं। सदर से वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट को जाने से पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत की जो रूह है सर, उसके ये ऐन मुताबिक है। Now I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 5A stands part of the bill. Clause 6. There is an amendment in Clause 6 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Shiza? Okay. Ms. Shiza Fatma to move. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 6A, after paragraph 1, the following new paragraph shall be inserted, namely,
1A, in subsection A for the clause 3, the following shall be substituted, namely 3. The Prosecutor General Accountability shall hold office for a non-extendable term of 3 years. B, in subsection A in clause 5 for the words President of Pakistan, the words Federal Government shall be substituted, and C, the existing paragraph 2 shall be omitted. Okay. जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस डू यू अपोज इट? नहीं सर, जैसे पहले अर्ज किया है, फेडरल गवर्नमेंट की सब्स्टिट्यूशन है और एक्सटेंडेबल हमने पहले भी कहा नहीं होना चाहिए. आई सपोर्ट इट. Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 6 as amended stand part of the bill. Clause 7 amendment. There is an amendment in clause 7 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq Amanes. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee for Clause 7, the following shall be substituted, namely 7. Substitution of Section 9, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance for Section 9, the following shall be substituted, namely corruption and corrupt practices. 9. Corruption and corrupt practices. A holder of a public office or any other person is said to commit or to have committed the offence of corruption and corrupt practices. 1. If he accepts or obtains from any person or offers any gratification directly or indirectly other than legal remuneration as a motive or reward, such as is specified in Section 161 of the Pakistan Penal Code, for doing or for forbearing to do any official act, or for showing or forbearing to show in the exercise of his official functions favor or disfavor to any person, or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person. Or 2. If he accepts or obtains or offers any valuable thing without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate from any person whom he knows to have been or likely to be concerned in any proceedings or business transacted or about to be transacted by him, or having any connection with his official functions, or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned. Or 3. If he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use or for the use of any other person any property entrusted to him or under his control, or willfully allows any other person so to do. Or 4. If he by corrupt, dishonest or illegal means obtains or seeks to obtain for himself or for his spouse or dependents or any other person any property, valuable things or pecuniary advantage. Or 5. If he or any of his dependents or other benamidars through corrupt and dishonest means owns, possesses or acquires rights or title in assets substantially disproportionate to his known source of income, which he cannot reasonably account for. Explanation 1. The valuation of immovable property shall be reckoned on the date of purchase, either according to the actual price shown in the relevant title documents or the applicable rates prescribed by District Collector or the Federal Board of Revenue, whichever is higher. No evidence in contrary to the latter shall be admissible. Explanation 2. For the purpose of calculation of movable assets, the sum total of credit entries of bank account shall not be treated as an asset. Bank balance of an account on the date of initiation of inquiry may be treated as a movable asset. A banking transaction shall not be treated as an asset unless there is evidence of creation of corresponding asset through that transaction. 6. If he intentionally misuses his authority by disregarding law so as to gain any monetary benefit or favor for himself or any other person related to him or on his behalf. Explanation 1. That an act done in good faith and in discharge of duties and performance of official functions shall not constitute an offence under this clause. Explanation 2. That nothing shall be an offence of misuse of authority unless it is proved through material
evidence that the holder of public office has gained any monetary benefit or asset from the person in whose favor the act of misuse of authority has been rendered. Explanation 3, that the authority of the holder of a public office shall be clearly specified as per the applicable government rules and regulations. 7, omitted. 8, if he commits an offence of willful default, or 9, if he commits the offence of cheating as defined in section 415 of Pakistan Penal Code 1860 and thereby dishonestly induces members of public at large to deliver any property including money or valuable security to any person, provided that nothing shall be an offence under clause 9 unless it is established that there was an intention of cheating at the time of initiation of a transaction. Explanation. The civil and commercial disputes between parties shall not be triable under provisions of this ordinance. Illustration 1. A runs a Ponzi scheme and gives profit to its investors with intent to allure public. A is said to have committed cheating. Illustration 2. A receives investments in a lawful business and continued to pay agreed profits to the investor. Later, the business runs into losses and a default on his obligation. A has not committed cheating. 10. If he commits the offence of criminal breach of trust as defined in section 405 of Pakistan Penal Code 1860 with regard to any property including money or valuable security entrusted to him by members of the public at large. 11. If he in his capacity as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent commits criminal breach of trust as provided in section 409 of Pakistan Penal Code 1860 in respect of property entrusted to him or over which he has dominion. And 12. If he aids, assists, abets, attempts or acts in conspiracy with a person or a holder of public office accused of an offence as provided in clauses 1 to 11. B. Subject to the provisions contained in section 439, 496, 497, 498 and 498A of the Code, no court other than the court established under this ordinance shall have powers to grant bail or order release of the accused. C. If after completing the investigation of an offence against a holder of public office or any other person, the chairman NAB is satisfied that no prima facie case is made out against him and the case may be closed, the chairman NAB shall refer the matter to the court for approval and for the release of the accused, if in custody. D. The closure of an inquiry or investigation shall be communicated to the accused and such inquiry and investigation shall not be reopened without prior permission of the court. Minister of Law and Justice, do you oppose it? Sir, I must appreciate the young parliamentarian. उन्होंने बड़ी मेहनत करके और मेरे ख्याल में जो ये कोर्ट डिसीजंस आए हैं जो मैं बात कर रहा था कि सिंपली अथॉरिटी की एक्सरसाइज करते हुए गलती करने पे जेल में ना डालें जब तक करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की एविडेंस ना हो और जो असासों की बढ़ोतरी और कमी में उस वक्त तक जुर्म नहीं होगा जब तक कि वो करप्ट प्रैक्टिस के साथ ना मिले। ये वो सारे अदालती फैसले थे, मैं रात एग्जामिन कर रहा था। वी मस्ट अप्रिशिएट द मूवर कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये तैयार की है। वी डोंट अपोज इट। Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted and clause 7 as amended stands part of the bill. Insertion of new clause 7A. There is an amendment for insertion of new clause 7A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, after clause 7, the following new clause shall be inserted, namely 7A, amendment of section 10, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance in section 10, A, in subsection A for the figure 14, the word 14 shall be substituted. B, in subsection A for full stop at the end, a colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that the convict shall be entitled to benefit under section 382 BOF, the code, and C, subsection D shall be omitted.
Ji, Minister for Law and Justice, do you oppose it? Sir, I don't oppose it, जी. It's quite reasonable, जी. और ये भी उसी हवाले से उसी तनाज़र में है जो पहले मैंने अर्ज़ किया था. Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 7A stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 7B standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khwaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khwaja, Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, after clause 7A as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 7B, omission of section 14 Ordinance Roman 18 of 1999 in the Ordinance section 14 shall be omitted. Thank you. No, sir, I don't Minister oppose for it. Law and Justice, do you I oppose it? don't oppose it. ये जो इन्होंने मिलके कोई amendment बनाई है, सर उस scheme में fit in होता है. Don't oppose it. Now I put the amendment as moved by Mohtarma Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 7B stands part of the bill. There is an amendment in clause 9 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. नहीं फिर पहले बताया करें, अभी उन्हीं को करने दें. Okay, Sayyid Hussain Tariq साहब. हाँ भले उनको दे दें सर. It's not an issue. Thank you, sir. Sayyid Hussain Tariq साहब का माइक खोले, please. Thank you, move sir. the amendment. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 9, for the proposed Section 16, the following shall be substituted, namely 16, case management and trial of offences, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force. An accused shall be prosecuted for an offence under this ordinance in the court established under this ordinance, and the case shall be disposed of within 1 year. B, the court shall sit at such place or places as the federal government may by order specify in this behalf. C, where more courts than one have been established at a place, the Chief Justice of the High Court of the province concerned shall designate a judge of any such court to be an administrative judge, and a case triable under this ordinance shall be filed before the court of the administrative judge, who may either try the case himself or assign it for trial by any other court established at that place at any time prior to the framing of the charge. D, in respect of a case assigned to a court under subsection C, all orders made or proceedings taken before the assignment shall be deemed to have been made or taken by the court to which the case has been assigned. E, notwithstanding anything contained in this section, if in respect of any case relating to an offence triable under this ordinance, the Chairman NAB, having regard to the facts and circumstances of the case, may file a reference before any court established anywhere in Pakistan, and such court shall have the jurisdiction to try the same.
Minister for Law and Justice, do you oppose it? नहीं सर, ये फेयर इनाफ है जी। इसमें एक तो वो एक नॉर्मली ख़त्म की गई सर, 30 दिन था कानून में, मैंने देखा है। कोर्ट्स भी कहती थी कि आज तक सर जब से नैब बना 30 दिन में कोई रेफरेंस जो है कंप्लीट नहीं हुआ। 1 साल रीजनेबल टाइम है ताकि कानून से मजाक ना किया जाए, और जो दो बाकी तरमीम है वी सपोर्ट इट इस क्लॉज को। Now I put the amendment as moved by Mr. Syed Hussain Tariq Sahab to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 9 as amended stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Sayyid Hussain Tariq to move the amendment. Thank you, sir. Thank you very much once again. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, after Clause 9, the following new Clause 9A shall be inserted, namely 9A, Amendment of Section 18, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance in Section 18A, in subsection C, for the expression or investigation, the expression, if after completion of inquiry the allegations of commission of an offence under this ordinance are substantiated with material evidence, the matter shall be converted into investigation, provided that the report of the inquiry shall be provided to the accused. B, in subsection D, the letters NAB at the end shall be omitted. C, subsection E shall be omitted, sir. D, in subsection F, for the words expeditiously as may be practical and feasible, the words within 6 months shall be substituted, sir. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? जी सर, मैंने देखा है, ये फिर बड़ी जायज़ बात है सर। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं था, और साल हा साल लोगों को उस चुंगल में फंसा के उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। नैब ने 4-4 साल भी इंक्वायरीज की, इन्वेस्टिगेशंस बुलाया भेज दिया, बुलाया भेज दिया। इस कानून के ज़रिए 6 माह की हद मुकर्रर कर दी गई है कि आपने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन 6 माह में मुकम्मल करनी है, ताकि किसी मासूम शख्स पे ये तलवार जो इंडेफिनेटली ना लटक सके। आई सपोर्ट दिस सर। Thank you. Now I put the amendment as moved by Sayyid Hussain Tariq to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9A stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9B standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Agha Rafiullah to move the amendment. शुक्रिया सर। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतिसाब तरमीम दोम बिल 2021 में हस्ब बाला शामिल करदा शिक 9 अलिफ के बाद हस्ब झेल नई शिक 9 बे शामिल कर दी जाएगी, यानी 9 बे ऑर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 21 की तरमीम ऑर्डिनेंस में दफ़ा 21 में शिक दाल में नीम शरह की बाद लफ्ज़ और का इजाफ़ा कर दिया जाएगा और इसके बाद शिक जे हज़फ कर दी जाएगी। शुक्रिया। Minister for Law and Justice, do you oppose it? जनाब स्पीकर, आज मुझे अपनी उर्दू से कम इल्मी का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ है। अगर तो यही सही तर्जुमा है जो अंग्रेजी में मैंने पढ़ा है, डोंट अपोज इट। Now I put the amendment as moved by
Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9b stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9c standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now, I call upon Sayyid Agha Rafiullah to move the amendment. शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतसाब तरमीम 2 बिल 2021 में हस्ब बाला शामिल करदा शिक 9(b) के बाद हस्ब झेल नई शिक शामिल कर दी जाएगी, यानी 9(g) आर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 23 का हज़फ करना, आर्डिनेंस में दफ़ा 23 को हज़फ कर दिया जाएगा। शुक्रिया। Minister for Law and Justice, do you oppose it? No, sir, I don't oppose it. और ये सर जरा आसान भी थी उर्दू। Okay. Now I put the amendment as moved by Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9c stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9d standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move the clause 9D, amendment in 9D, that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after clause 9C as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9D, substitution of the Section 24 Ordinance Roman 18 of 1999 in the Ordinance for Section 24, the following shall be substituted, namely 24, arrest. A, the chairman NAB may issue warrant of arrest during the course of investigation under this ordinance if, number 1, Roman 1, the accused is intentionally or willfully not joining the investigation after repeated notices. Roman 2, the accused is attempting to abscond. The Roman 3, there are sufficient grounds for the accused would tamper with the prosecution evidence, or Roman 4, there is credible information regarding repetition or continuation of offences under this ordinance. B, if the chairman NAB or an officer of the NAB duly authorized by him decides to refer the case of the court for such a reference along with report of investigation, officer shall contain the substance of the offence or offences as the case may be alleged to have been committed by the accused, and a copy of such reference to which the case has been sent to try the accused, and another copy shall be delivered to the accused. C, the provisions of subsection A shall also apply to cases which have already been referred to the court. D, notwithstanding anything contained in the code where the holder of the public office or any other as may be informed him to the grounds and substance on the basis of which he has been arrested, and produce him before the court within a period of 24 hours of arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court, and such person shall, having regard to the fact, the circumstances,
of the case be liable to be detained in the custody of the NAB, for the purpose of inquiry and investigations for a period not exceeding 14 days. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? एग्जामिन करके ही आज जो शुरू में थोड़ा सा बयान दिया था कि कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुई, उनमें अरेस्ट, डिटेंशन और रिमांड था। तो हमारे इन साथियों ने बड़ी मेहनत के साथ ये जो अमेंडमेंट तैयार की है। रिमांड की मुद्दत 90 दिन से 14 रोज़ कर दी गई, जो कि पूरे पाकिस्तान में दीगर जराइम के लिए है और संगीन तरीन जराइम के लिए भी 14 दिन है। इसी तरह सर इसमें उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि जो अरेस्ट के लिए ग्राउंड्स क्या होंगी, कि कब अरेस्ट करना ज़रूरी है। ये अदालत उस्मा ने 7 रुकनी और 5 रुकनी 2 जजमेंट्स दी और उन्होंने कहा हर केस में ये शर्त नहीं समझ लेना चाहिए कि इधर केस हुआ उधर गिरफ्तारी हो जाए। तो ये वो सेफ गार्ड्स हैं जो आईने पाकिस्तान देता है, जो अदालतों ने दिए थे। तो आई सपोर्ट जी। Now I put the amendment as moved by Mohtarma Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those... जी असलम बुतानी साहब, आप अपने माइक पे जाएं। सर जो सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं उसकी डेफिनेशन क्या है? वो तो फिर नैब कहेगी हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं। तो हमें, मैं मिनिस्टर साहब से कहता हूँ कि सफिशिएंट ग्राउंड्स को एलाबोरेट करें कि जी क्या है ना सफिशिएंट ग्राउंड्स ना। जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, विल यू एक्सप्लेन इट? करें सर इसकी। मैंने सर सुबह इनके साथ बैठ के ये बिल्कुल एग्जामिन किया। सफिशिएंट ग्राउंड्स जो बुतानी साहब बहुत सारी केसेस में बेतहाशा मुकदमात में और कवानीन में बयान की गई हैं, वो चीज़ सफिशिएंट ग्राउंड्स में आएगी जिसको साबित करने के लिए कॉमन सेंस के साथ जो आप बात करें। वो एक मिसाल मसलन ले लेते हैं, वो कहते हैं जी ये तफ्तीश ज्वाइन नहीं कर रहा। अब इसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स ये हैं कि आप ये साबित करें कि हमने नोटिस दिया, फिर ये साबित करें कि नोटिस इस तक पहुंचा, फिर ये साबित करें कि नोटिस वसूल करने के बावजूद इसने तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। ऑर्डर इन द हाउस। ये सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं सर। ये मैंने एग्जामिन किया और उसके बाद सर नहीं होगा इंशाल्लाह। सर देखें मिसयूज सर जिन्होंने मतलब निकालने होते हैं वो तो आसमानी सहीफों से भी निकाल लेते। नहीं सर ये आइन के मुनाफी कोई चीज़ हम नहीं डाल सकते कानून में। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इख्तियार है कि वो मुनासिब अप्रोप्रिएट केसेस में गिरफ्तार करे। मैंने देखा है मूवर्स ने बड़ी मेहनत की और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रीसेंट जजमेंट एक गुलाम हुसैन केस है 7 जजेस मेंबर का, उसमें उन्होंने कहा कि हर केस में ना गिरफ्तार करें और इसको इस इख्तियार को रन ऑफ मिल केसेस में नहीं लेना चाहिए। तो ये उसके ऐन मुताबिक। थैंक यू। The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted and new clause 9D stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9E standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, after clause 9D as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9E, amendment of section 25 ordinance Roman 18 of 1999 in the ordinance in section 25 in subsection B for full stop at the end a colon shall be substituted and thereafter the proviso shall be added, namely provided that the statement or witness of any accused entering into plea bargain or voluntarily return shall not prejudice case of any other accused. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? सर ये एक अच्छी तजवीज़ है और इस पे CRPC का जो कानून है हमारा वो भी बिल्कुल इसको सपोर्ट करता है अदालती फैसले। सर होता ये है कि ये जो प्ली बारगेन और वॉलंटरी रिटर्न में लोगों के खिलाफ मुकदमा बनाया
उसमें से एक बंदे को लालच दिया कि आप वादा माफ बन जाओ, उसको घर भेज दिया और उसकी शहादत की बुनियाद पे बाकी सबको पकड़ के बिठा लिया। ज़ाब्ता फौजदारी की जो कानून है वो कुछ फ़र्क है, उसका उसके दूसरे के केस पे फ़र्क नहीं आता और इसी वजह से इसको इन कॉन्सोनेंस विद दोज लॉज किया गया है। मैंने एग्जामिन किया सर, वी डोंट अपोज इट। Thank you. Now I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted and new clause 9E stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9F. Standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq Amnes. Now I call upon Mohtarama Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after clause 9E as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9F, amendment of section 26 ordinance Roman 18 of 1999 in the ordinance in section 26 for subsections A and B, the following shall be substituted, namely 26, tender of pardon, notwithstanding anything contained in the code at any stage of inquiry, investigation or trial, the chairman NAB may, with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to any offense, tender a full or conditional pardon to such a person on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge based on material relating to the said offense, including the names of the persons involved therein, whether a principals or abettors or otherwise, provided that such person shall stand disqualified for a period of 5 years to be reckoned from the date of the termination of the trial for seeking or from being elected, chosen, appointed or nominated as a member or representative of any public body or any statutory or local authority or in service of Pakistan or of any province. B, every person accepting a tender of pardon under subsection A shall be examined by a magistrate in the presence of the accused, who shall be given an opportunity of cross-examining the person, and the person shall also be examined as a witness in the subsequent trial. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? जी ठीक है सर, ये वाकई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को देखा जाए तो उसके मुताबिक ठीक है। अगर आप जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 62F में और उसमें जो दिए गए हैं सारे जो डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड्स हैं उनके मुताबिक भी है, और दूसरा ये वैसे भी सर गारंटी करता है कि जो टेंडर ऑफ पार्डन के हवाले से बाकी राजुल वक्त कवानीन हैं उनसे ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। आई डोंट अपोज इट सर। Now I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted and new clause 9F stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9G. Standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq Amnes. Now I call upon Mohtarama Shahida Akhtar Ali to move the amendment.
Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 9F as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9G, substitution of a Section 28 Ordinance 18 Roman of 1999 in the ordinance for Section 28. The following shall be substituted, namely 28. Appointment of officers and staff in the National Accountability Bureau. A. The National Accountability Bureau may in such manner and on such term and conditions of service, efficiency, discipline and conduct, etc. as may be prescribed by rules, appoint such officers and staff as may be considered necessary for the efficient performance of its functions. B. The National Accountability Bureau may appoint advisors, consultants and experts on payment of such fee or remuneration as may be prescribed by rules to perform its functions and exercise its power under this ordinance. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose ठीक है it? सर, उनकी इंटरनल जो वर्किंग है उसकी एफिशिएंसी के लिए है. देखें सर, ये we don't oppose it. Now I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted and new clause 9G stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 10A standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 10, the following new clause shall be inserted, namely, amendment in Section 32, 10A, amendment of Section 32, Ordinance 28 of 1999. In the ordinance in Section 32, subclause A, in subsection A for the word 10, the word 30 shall be substituted, and clause B, in subsection B for the expression and shall be disposed of within 30 days of the filing of the appeal. The expression, the provisions contained in section 426 of the code shall apply mutus mutandis in case of an appeal filed against order of conviction. Minister for Law and Justice, do you oppose it? मेरे ख्याल में एक थोड़ा वो पढ़ने में it is मुश्ताक साहब 18 है जी. ऑर्डिनेंस आ गया जी ऊपर. No. 10A में 18 वो 28 पढ़ा गया था. ये ठीक है. 18 है, से 18 पढ़ा गया. अगर तो 18 की हम जाहिर है उसी में अमेंडमेंट आ रही है. ये मैंने देखा है सर. इसमें पहले हाई कोर्ट में अपील 10 रोज के अंदर फाइल करना होती थी. सर जो कोई बंदा पाबंद सलासल है उसके ख़ानदान के लिए वकील अरेंज करना, कागजात पूरे करना टाइम बहुत थोड़ा था. उसे 30 दिन किया गया है, जो कि बहुत सारे मुकदमात जो कि इवन उम्र कैद के सजाए मौत के मुतल्लिक़ है उनमें भी 30 दिन है. और दूसरा, जमानत का हाई कोर्ट को इख्तियार दिया गया है कि वो सज़ा अगर समझे हाई कोर्ट कि वो कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है तो पेंडिंग अपील वो बाकी जिस तरह पूरे मुल्क के कैदियों को ये सहूलत है कि उनकी सज़ा मुअत्तल कर सकती है, मुअत्तली की पावर्स दी गई हैं. मेरे ख्याल में ये करीने इंसाफ है. आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है सब शहरियों को एक तरह से ट्रीट करें. वी डोंट अपोज इट. Thank you. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and consequently the amendment is adopted and new clause 10A stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 10B standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mr. Sayyid Agha Rafiullah
to move the amendment. शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतसाब तरमीमी दोम बिल 2021 में बाला शामिल करदा शिक 10 अलिफ के बाद हस्ब झेल नई शिक शामिल कर दी जाएगी, यानी 10 बे आर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 33 दाल की तरमीम आर्डिनेंस में दफ़ा 33 में दाल में लफ्ज़ सदर को अल्फाज कौमी असम्बली और सेनेट से तब्दील कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। Minister for Law and Justice, do you oppose it? जी, पहले कानून में जो नैब के चेयरमैन हैं वो अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट सदर मुमलिकत को पेश करते हैं और फाजल अराकीन ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट सैनेट और कौमी असम्बली को पेश की जाए, जो कि सबसे बड़े मुंतखब मुख्तदर इदारे हैं। मेरे ख्याल में इसमें किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए बशमूल हुकूमत के। No, I put the amendment as moved by Mr. Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 10b stands part of the bill. There is an amendment in clause 11 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq Mannes. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 11, for the proposed Section 33F, the following shall be substituted, namely 33F, restriction on issuance of public statements. No official of NAB in any capacity shall make any statement in public or to the media regarding persons involved in any inquiry or investigation conducted by NAB until a reference has been filed against such person. Minister for Law and Justice, do you oppose it? जनाब स्पीकर, आज फाजल रुकन कौमी असम्बली ने वाकई कुछ बड़ी हार्टनिंग और दिल के करीब अमेंडमेंट सजेस्ट की हैं। ये सर वही बात है कि आप अगर किसी की किरदार कुशी कर दें और उसके बाद कहें कि नहीं आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, तो वो कहाँ से सनद लेगा कि मेरे खिलाफ। सर, दौराने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ये वतीरा रहा है नैब का कि उनके तर्जुमान अखबारी बयानात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके कहते हैं कि ये इल्ज़ामात हैं और इसके बारे में अब ये तफ्तीश हो गई है। कानून में ऐसी कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से किसी शख्स के आइनी हकूक़ के ऊपर ज़द आए और उसकी शोहरत को दागदार कर दिया जाए और 2 माह 3 माह बाद कह दिया जाए कि जी इनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, ये बेगुनाह है, तो इंक्वायरी बंद कर दी जाए। ये एक अच्छी तजवीज़ है। वी डोंट अपोज इट। थैंक यू। Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 11 as amended stands part of the bill. There is an amendment for addition of a new clause 12 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq Mannes. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by Standing Committee after Clause 11, the following new clause shall be added, namely, insertion of Section 33G, Ordinance of 1999. In the ordinance after Section 33F, substituted as aforesaid, the following new section shall be inserted, namely, 33G, punishment for making public statements. Whoever contravenes the provision of Section 33F shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year but shall not be less than 1 month, and with a fine of 1 million rupee.
Minister for Law and Justice, do you oppose it? ठीक है सर, ये जो मिसयूज होता है पावर्स का और उस हवाले से ज्यादतियां की जाती हैं, उस पर एक चेक है इस क्लॉज में. आई डोंट अपोज इट जी. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 12 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 13 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Sayyid Agha Rafiullah to move the amendment. शुक्रिया जनाब स्पीकर. मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतसाब तरमीम दोम बिल 2021 हस्ब बाला इजाफा शुदा शिक 21 के बाद अज़ेल नई शिक का इजाफा कर दिया जाएगा, यानी आर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 34 के तहत आर्डिनेंस में ज़िले दफ़ा 34 अस्ब झेल से तब्दील कर दिया जाएगा, यानी कवायद वाज़े करने के इख्तियार वफाकी हुकूमत एक्ट आज़ा के मकसद के उसूल के लिए सरकारी जरीदे में एक अलामिया के ज़रिए कवायद वाज़े कर सकती है. शुक्रिया. Now, जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, डू यू अपोज इट? जी सर, ये रूल मेकिंग के लिए फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियारात के बारे में है. आई डोंट अपोज इट जी. Now I put the amendment as moved by Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 13 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 14 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Mr. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now, I call upon Sayyid Hussain Tariq to move the amendment. Thank you, sir. Once again, thank you very much, sir. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, after Clause 13, as added above, the following new clause shall be added, namely 14, Amendment of Section 36, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance in Section 36, for full stop at the end, a colon should be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that if the accused has been acquitted by the court on the grounds that the case was initiated with malified intentions or based on false or fabricated evidence, the person responsible shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to a fine, sir. जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस. जी सर, मैंने एग्जामिन किया था जी. ये कई और कवानीन में भी है कि जो वैक्शेस और जो गलत केसेस बनाए जाते हैं, और अगर अदालत कहे कि ये मुकदमा जो है बदनीति की बुनियाद पे तैयार किया गया और उस शख्स को जेल में रखा, उसका ट्रायल किया गया, तो खाली बरीयत से क्या बेहतर नहीं है कि जिसने ये सारा कुछ किया है वो भी कुछ ना कुछ इसको फेस करे. और हमारे बहुत सारे दीगर लॉज के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है, पीपीसी में भी है, ये एंटी नारकोटिक्स में भी है, बहुत सारे केसेस में होता है. तो आई सपोर्ट इट. ये एक अच्छा चेक होगा कि लोगों को गलत केसेस में अपनी अना की तस्कीन के लिए मुलव्वस नहीं किया जाएगा. Now I put the amendment as moved by Mr. Sayyid Hussain Tariq to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 14 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 15
Standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now, I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. Honorable Speaker, I wish that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee after Clause 14, as added above, the following new clause shall be added. Amendment of Section 37 of 1999. In the ordinance in Section 37 of the word President, the words Federal Government shall be substituted. Minister of Law and Justice, do you oppose it? जी सर, ये इन मूवर्स का मैंने देखा है सर, इनकी ये उसी स्कीम में फिट इन होती है कि फेडरल गवर्नमेंट को पूरी स्कीम ऑफ लॉ में रखा गया है कि रूल मेकिंग के हवाले से जो रिपोर्ट्स जानी हैं, जो बाकी काफ़ी सारे मामलात हैं, सब्स्टिट्यूशन उसी की कंटिन्यूएशन है. No, I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is... I don't oppose it, जी. No, I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 15 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. There is an amendment in clause 1, standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. The last, it was actually clause 1, लेकिन अब आखिर में इसको हम पढ़ रहे हैं और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और अपने तमाम साथियों का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन तरामीम को यकीनी बनाया और अपनी इनपुट्स जो हैं तमाम मेंबरान ने बड़े अच्छे तरीके से रिसर्च करने के बाद जो हैं वो पेश की और इस ऐवान का भी ममनून हूँ तमाम मेंबरान का जिन्होंने उनको मंजूर किया. जनाब स्पीकर, in clause 1, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in clause 1, for the subclause 2, the following shall be substituted and shall always be deemed to have been substituted, namely, this act shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on and from commencement of the National Accountability Ordinance 1999. Minister for Law and Justice, do you oppose it? ठीक है सर, I support it, जी. No opposition. No, I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 1, preamble and short title as amended stands part of the bill. Shiza Fatma Khaja. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, in serial number 17, clause 9F, section 26, there was a typo that I'd like to correct now. It reads... Can you read it, please? Yes, please. Section 26, tender of pardon. A, notwithstanding anything contained in the code at Proviso padhe iska. Sirf provide, theek hai. Usme hi error hai. Provided that such person shall stand disqualified for a period of 10 years, not 5 years.
जी, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। मूवर्स ने इसे अगर डिलिबरेट करके इस तरह से पेश की थी और ये टाइपो कहते हैं इस ऐवान की नज़र में, अगर मूवर की जो असल रूह थी इसको बनाने की उसमें 10 है तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन जी, इसको अगर पढ़ा जाए 10 पढ़ा जाए हमें कोई एतराज़ नहीं। ओके, स्टैंड्स करेक्टेड, प्लीज करेक्ट इट। Item number 9, Senator Azam Nazir Tarad, Minister for Law and Justice, to move item number 9. Sir, I wish to move the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021 be passed. Now, I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021 be passed. All those in favor of motion may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed. Minister for Parliamentary Affairs, शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब। जी बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है स्पीकर साहब के अदम एतमाद के दौरान जो हमारा असेंबली का स्टाफ है इन्होंने बहुत मेहनत भी की है और रात देर तक ये इजलास की कार्रवाई को चलाते रहे हैं और हमारे साथ 12-1 बजे तक रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इनको 1 माह का बोनस दिया जाए। Approved. Thank you. Honorable Prime Minister Sahab. Thank you very much, Mr. Speaker. जनाब स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त अनायत फरमाया। अभी जो इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने Order in the House, please. The leader of the House is speaking, and please आप अपनी अपनी chairs पे अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें. Thank you. जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब। 10 अप्रैल 2022 एक तारीख साज दिन था जब पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में आइन और कानून की रूह के मुताबिक अदम एतमाद की करारदाद कामयाब हुई और आइन के मुताबिक इस ऐवान की मंशा और वोटों के मुताबिक एक नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई। ना दीवारें फलांगी गईं और ना ही कोई गिरफ्तारियां हुई और पाकिस्तान और ये ऐवान और आपकी जो इज्जत और तौकीर है उसमें इजाफा हुआ। जनाब स्पीकर, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान जो कि तमाम इदारों की मां है, तमाम इदारे इसी पार्लियामेंट की कोख से उन्होंने जन्म लिया। क्या मैं बड़े अदब से आपसे ये सवाल करना चाहता हूं और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तमाम मेंबरान से आयल के दोनों तरफ कि क्या किसी
जत्थे को या किसी जमात को डंडों और पत्थरों के जरिए ये हक दिया जा सकता है कि वो आइन से बगावत करे और आइन को तहबाला करे। जनाब स्पीकर, ये हमारी हुकूमत जो 11 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया था, दो हमारे सामने जो मुतहद्दा जो पार्टियां जो इसका हिस्सा हैं, दो हमारे सामने अहदाफ थे। एक, शफाफ तरीके से आइंदा इलेक्शन हो, जिसका आज यहाँ पर बिल पेश किया गया, और मैं मुबारकबाद देता हूँ इस हाउस को कि उन्होंने आज ये बिल पास करके आइंदा के लिए शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रखती है। और उसके लिए तमाम मैं कायदीन और मेंबरान का न सिर्फ शुक्रगुजार हूँ बल्कि मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब स्पीकर कि आपने बड़े अच्छे अंदाज में आज इनके ऊपर आपने बहस करवाई। और दूसरा जनाब स्पीकर हदफ ये था और है कि हम जो डूबती हुई हमारी मईशत है, जो हचकोले खा रही है, उसको हम सब मिलकर उसको हम शबाना रोज मेहनत करके हम उसको किनारे पर लगाएं। ये काम एक इंतहाई मुश्किल काम है, जान जोखों का काम है, लेकिन जनाब स्पीकर, दुनिया की तारीख, असर हाजिर की तारीख इस बात की गवाह है, पुकार पुकार कर हमें बताती है कि जब हालात बहुत मुश्किल हों और बहुत बड़े चैलेंजेस हों, तो फिर उतनी कुव्वत और मेहनत से जब आप काम करते हैं तो फिर हालात का रुख बदल जाता है और हालात बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये दुनिया की तारीख हमें बताती है, हमें कुरान करीम इसका सबक देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना, उससे हमें ये सबक मिलता है जी। तो मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि ये है वो दो अहदाफ जिसके लिए मैं और ये हमारी मौजूद टीम के मेंबरान जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो क्या जनाब स्पीकर, इन हालात में जब पिछली हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और आज जब हम उसको ठीक करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका फल तो अल्लाह ताला ने देना है, तो क्या फिर किसी फितना और फसाद और अनारकी की गुंजाइश है? क्या फिर दोबारा धरनों की गुंजाइश है? मैं आपको 2014 में लिए चलता हूं जनाब स्पीकर, इस मौजूद ऐवान को, कि जब यहां पर डी चौक में धरने हो रहे थे और जनाब स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के दीवारों पर मैले कपड़े वहां पर रखे गए थे और जनाब स्पीकर कब्रें खोदी गई थी, कब्रें खोदी गई थी और इमरान न्याजी गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि जाओ उस वक्त के वजीर आजम का गला पकड़ के लाओ और उनको यहां पर लेके आओ। और जनाब स्पीकर रात के अंधेरे में डंडे और सोटों से चल पड़े और कहा कि पार्लियामान पे हमला कर दिया और पाकिस्तान टेलीविजन पर हमला कर दिया। जनाब स्पीकर, वो दिलखराश मनाजर आज भी हमारी आंखों के सामने है। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि उसके नतीजे में क्या हुआ। चीन के सदर हमारे पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में चीन हमारा दोस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। पेशावर से लेकर कराची तक पूरी कौम
22 करोड़ आवाम इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में चीन शुमार होता है। हमारे दूसरे इस्लामी ममालिक भी हमारे दोस्त हैं। तो चीन के सदर तशरीफ ला रहे थे और चीनी सफ़ीर जो उस वक्त यहाँ पर थे, उन्होंने उनको पैगाम भिजवाया कि मेरे सदर आ रहे हैं और आपके दोस्त आ रहे हैं, आप मेहरबानी करके ये खाली कर दे जगह। इमरान नियाजी ने साफ इनकार कर दिया। हट धर्मी जिद, क्या खाली वो हट धर्मी और जिद थी? नहीं, वो साजिश थी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ, गरीब आदमी के खिलाफ, एक बेवा के खिलाफ, बिजली के जो अंधेरे थे उनको ख़त्म करने के खिलाफ, खुशहाली और तरक्की के खिलाफ। वो एक साजिश थी जनाब स्पीकर। और इस तरह वो दौरा मुअख्खर हो गया और फिर 7 महीने के बाद वो दोबारा तशरीफ लाए अप्रैल 2015 में, और जो मुआहदे सितंबर 2014 में जिनके ऊपर दस्तखत होने थे वो 7 महीने मुअख्खर हो गए। इसलिए कल जब मैं करोट में था, जो 720 मेगावाट का पन बिजली का मंसूबा है, आपसे बेहतर कौन जानता है, आप खुद इसके मिनिस्टर रहे हैं और वज़ीर आज़म भी रहे हैं। तो कल वहाँ पर मैंने ये कहा कि अगर ये मंसूबा ये 2014 में ये दस्तखत हो जाते चीनी सदर और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान, तो ये मंसूबा 1 साल पहले मुकम्मल हो जाता और 700 मेगावाट बिजली इस कौम को मिलती, सस्ती बिजली। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि कल चीनी कंपनी के चेयरमैन ने मेरी दरख्वास्त पर यह कहा, मैंने कहा कि जब तक COD, आप जानते हैं कि COD के क्या मानी है कि कमर्शियली ऑपरेटेड डेट, तब तक जब तक ये बिजली की तरसील आप देंगे, आप वो जो भी नर्ख हैं आप ना लें, हमें ये बिजली आप उस वक्त तक मुफ्त दें। जनाब स्पीकर कल उन्होंने वादा कर लिया और 4 अरब रुपए इस कौमी खजाने में, वजीर खजाना यहाँ पर मौजूद हैं जिनको खाली खजाना मिला है। 4 अरब रुपए का फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ। और 4 अरब रुपए का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप 4 अरब रुपए का कोई कैंसर का अस्पताल बना लें, कोई 4 यूनिवर्सिटियाँ बना लें, या फिर बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में आप वहाँ पर सोलर का कोई प्लांट लगा लें, या फिर आप गरीब और मोहताजों के लिए आप उनकी दवाई और इलाज का इंतज़ाम करा लें। जनाब स्पीकर, ये कौम इस वक्त बहुत दुखी कौम है। इस कौम के जिस्म पर बहुत गहरे जख्म लग चुके हैं। पिछले 3.5 सालों में, पौने 4 सालों में गाली गलोच के अलावा कुछ नहीं हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहता। मेरे साथ कल जो मुसाफिर जो अपने सफ़र कर रहे थे, ऑनरेबल ये मिनिस्टर अपना एहसन इकबाल साहब थे और हमारे इंजीनियर साहब थे, वो यहाँ पर मौजूद खुर्रम दस्तगीर, उनको एक शख्स ने कहा, वो जुमला कहा, मुझे बखुदा, गो के हमारी वो सियासी मुखालफत है, सियासी मुखालफत होती है, दोस्ती भी होती है PTI से। उसने कहा कि उस दौर में बहुत वक्त ज़ाया हुआ। मेरा दिल पसीज गया। एक बतौर पाकिस्तानी के मुझे बेपना शर्म आई कि क्या आज हमें यह भी ताना सुनना पड़ रहा है ऐसे लोगों से जो कि पाकिस्तान के मुरब्बी और पाकिस्तान के दोस्त हैं। जनाब स्पीकर, यकीन करें कि कौमों की जिंदगियों में बड़े बड़े मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन इस तरह की तानाजनी के पिछले दौर में कुछ नहीं हुआ और वक्त ज़ाया हुआ, मैं समझता हूँ कि ये कायदे आज़म की रूह को तड़पाने के मुतरादिफ है। लाखों मुसलमानों ने जो इस मुल्क के लिए शहादत दी, पाकिस्तान के लिए, उनकी रूहों को दुख देने के मुतरादिफ है। और मैं समझता हूँ कि आज अगर हम ये सब मिलकर, यहाँ पर जो मेरे अपना बैठे हैं, हमारे मोहतरम इस तरफ बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, मिलकर जब इस कश्ती को दोबारा किनारे पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये धरने हो गए और फिर जलाओ और घराव की तहरीक का पैगाम दिया गया और खुलेआम कहा गया कि मैं हर तौर डी चौक पहुंचूंगा। जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो इस तरह जो शख्स 3.5 साल गाली गलोच उसका ओढ़ना बिछौना था,
दिन रात वो अपना ऑपोजिशन को चोर और डाकू कहना और फिर गुलों को और गुलदस्तों को उसको मस्मार कर दिया, उसको अपना क्या कहते हैं जी, उसको बेजान कर दिया, उसको मसल दिया। और आज फिर दोबारा उसी वही 2014 की जो इंतहाई दिल खराश वाकयात की उसको दोबारा ज़हनों में ताज़ा हो रही याद उसकी। जनाब स्पीकर, ये तारीख को अगर दोबारा दोहराने दिया गया तो फिर हम फिर हाथ रह जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। वो बड़ा मशहूर है वो, अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेवत। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि अदलिया और इदारों को किस तरह बदनाम किया जा रहा है, जनाब स्पीकर, जब कल एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या हम में से किसी ने एक लफ्ज भी कहा उनकी शान के खिलाफ या एहतराम को गुस्ताखी की? इनके बारे में मशहूर नहीं, तारीख गवाह है कि खुद कहा कि फलां चीफ जस्टिस मेरा केस सुने तो मैं तैयार हूं, और ये अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वही चीफ जस्टिस जिनका उन्होंने नाम लिया था, उन्होंने फैसला उनके खिलाफ दिया तो उनके खिलाफ दुश्मनाम तराजी शुरू कर दी। ये एक वाकया नहीं, 2 वाकयात हुए, 2 वाकयात। ये तारीख गवाह है, मैं कोई आराम कहानी नहीं सुना रहा। और अगर इनके हक में फैसले तो सब अच्छा है, अगर खिलाफ तो फिर इदारों को गालियां, अदालत उज़्मा को गालियां और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें। जनाब स्पीकर, ये ड्रामा कब तक रचाया जाएगा? ये कौम दुखी कौम है, कब तक ये बर्दाश्त करेगी? और कब तक तरक्की और खुशहाली का सफर जो है वो अपना बिल्कुल जाम होकर रह जाएगा? आखिरकार हिंदुस्तान, एक मुझे मिसाल नहीं देनी चाहिए मगर दुखी दिल से दे रहा हूं कि हिंदुस्तान, जनाब स्पीकर, वो जमाना था कि हम पाकिस्तान कई हवालों से उससे आगे थे और कई हवालों से वो हमसे आगे थे। ये कंपटीशन था बिल्कुल। आपको याद है कि 90 की दिहाई में पाकिस्तानी रुपए की कदर हिंदुस्तान के रुपए की कदर से ज्यादा थी। ये इट इज एन इररिफ्यूटेबल एविडेंस, फैक्ट, इसको कोई नहीं झुठला सकता। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि 90 की दिहाई में पाकिस्तान की जो मईशत है उसको आजाद किया गया, हिंदुस्तान ने हमें कॉपी किया, उसने हमें कॉपी किया। आज हिंदुस्तान की जो आईटी की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 200 अरब डॉलर, और पाकिस्तान की जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 1.5 अरब डॉलर। कहां हमने अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल आजाद छोड़ा, तमाम कदरें खत्म की, हिंदुस्तान हमें कॉपी करता और फिर मानता भी है। उसको वजीर खजाना ने कहा कि ये फैक्ट है कि पाकिस्तान का मॉडल हमने कॉपी किया है। जहां स्पीकर, आज तक सुनते आए स्कूलों में कि साउथ कोरिया ने पाकिस्तान का जो 5 ईयर प्लान उसको चुराया और वहां पर इम्प्लीमेंट कर दिया। हमारे प्लान लोग चुराएं और इम्प्लीमेंट करें और हम प्लान बना के उसकी तबाही कर दें। ये जनाब स्पीकर, ये संगीन मजाक अब मजीद जारी नहीं रह सकता, इसको ख़त्म होना होगा। और जनाब स्पीकर, हम सियासतदान हैं, सियासतदान मिलकर बात करते हैं, तलखियाँ होती हैं, उसको गुफ्तगू के ज़रिए उसको नेगोशिएट करते हैं, और कभी तल्ख नवाई भी होती है, सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर मैं ना मानूं और फिर बंदूक उठा लूं, परसों लाहौर में जो असलहा जो पकड़ा गया था वो किस काम के लिए था? वो इस्लामाबाद आ रहा था और एक सिपाही जो फर्ज की अदायगी में उसने जामे शहादत नोश किया। जनाब स्पीकर, उसके बारे में पीटीआई के सरदार ने क्या कहा? अभी स्पीकर, देखती आंख ने और सुनते कानों ने कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा कि एक शख्स
इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो शहादत कबूल करे, उसके सीने पे गोली लगे और उसके ऊपर तंज की जाए। यहाँ जिक्र ये आज तक कभी नहीं देखा कि इसकी वजह क्या है कि ये माशरे में जो जहर घोला गया है, जो माशरे को तकसीम दर तकसीम किया गया है और उसको जिस तरह खुली छूट मिली वो हर तरफ जाकर उसने तबाही मचा दी। तो आज अगर हम ये लोग इस मुल्क के अजीम बाशिंदे हैं, ये बहनें हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, इस तरफ बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, ये अगर उन्होंने एक कमर बांध ली है कि हमने ये काम करना है और मेहनत करनी है और ये हालत बदलनी है। अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जब तक तुम अपनी हालत खुद नहीं बदलते मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता। तो जब इन्होंने ये फैसला कर लिया है तो फिर दोबारा धरने, फिर आग लगाओ। किस तरह कल इस्लामाबाद के इस हसीन बाग को उजाड़ा गया, हर तरफ अपन धुआं था, आग लगी हुई थी और लोग ना जाने किस तरह मेहनत करके मालियों ने वो बाग लगाए, फूल के गुलदस्ते उगाए और किस तरह उनको कल उजाड़ा गया। जहां स्पीकर, ये है वो हालात जिसके लिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। ये हैं वो हालात जिसमें 3.5 साल इस ऑपोजिशन जो आज गवर्नमेंट में है उसको गाली बना दिया गया, उसका नाम गाली रख दिया गया। तो जनाब स्पीकर, मैं आज ये कहने आया हूं कि आज इस ऐवान को फैसला करना है, आज आपको फैसला करना है, आज मोहतरम आसिफ जरदारी साहब को फैसला करना है, बिलावल भुट्टो साहब को फैसला करना है, मुझे फैसला करना है, मौलाना असद साहब को फैसला करना है, सरदार अख्तर बेंगल साहब को फैसला करना है, सरदार खालिद मक्सी को फैसला करना है, मौलाना फजल रहमान साहब को फैसला करना है, इस ऐवान ने फैसला करना है, चौधरी सादिक ने फैसला करना है, 22 करोड़ अवाम ने फैसला करना है। क्या हमने फसाद की तरफ जाना? जी, अपना मेरे भाई एमकम सरबरा खालिद मकबूल सदीकी साहब ने फैसला करना है कि क्या हमने फितने का रास्ता रोकना है या फिर इसकी इजाज़त देनी और पाकिस्तान को अपने हाथों से खुदा न खास्ता तबाह होते देखना है। यहाँ स्पीकर, मैं ये बात कर चुका कि किस तरह 2014 में इस मुल्क के माश को तबाह किया गया। और जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि उस वक्त भी 2014 में भी वो अफसर और जवान जो अपनी ड्यूटी और अपना फर्ज अदा कर रहे थे उनको किस तरह लहूलुहान किया गया। एक एसपी, आज भी वो दिलखराश मंजर पूरे पाकिस्तान को याद है, इस मौजूद ऐवान को याद है। और 126 दिन डी चौक पर तमाशा लगा रहा और खूनी मार्च के ऐलानात होते रहे। यहाँ स्पीकर, आज फिर उसी खूनी मार्च का इरादा किया गया और जिस तरह जत्थे यहाँ पर इस्लामाबाद लाए गए, मैं समझता हूँ कि इसकी कतन इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात तय थी, मैंने ये कहा था कि कोई लाइव एम्यूनिशन लेके नहीं आएगा, पुलिस का एहलकार हो या कोई और हो, कोई लाइव एम्यूनिशन नहीं लेके आएगा। हत्तुल मकदूर हमने कोशिश की कि खुदा ना खास्ता किसी की जान को खतरा ना हो, किसी भी हवाले से, कोई हवाई फायर होता है, कुछ और हो जाता है। और बाकी जो मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसे गैर आइनी जो मार्च होते हैं, खूनी मार्च होते हैं, उनको रोकने के लिए जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो भी वो इकदाम लेती हैं एक दायरे में रहकर, उस पूरी दुनिया में होता है। आंसू गैस है, रबर बुलेट्स हैं, कंटेनर्स हैं, वो सारा इंतज़ाम किया गया। मगर उसके बावजूद भी जनाब स्पीकर के इस बात के पेश नज़र कि खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान ना हो जाए, हमने बहुत एहतियात बरती।
मगर जिस तरह वहाँ से ऐलानात हुए और अटक से ये जत्था आया और वहाँ पर केपी पुलिस के साथ, वज़ीर आला के साथ, जनाब स्पीकर, कभी दुनिया की तारीख में हुआ कि एक सूबा वफाक पर हमला करते? कभी आज तक हुआ? और मसल्ला जत्थे हों और भरपूर वहाँ पर नारे लगाए जा रहे हों। जनाब स्पीकर, एक सूबे की हुकूमत के सरबराह और उनकी पूरी मावनत से वफाक के ऊपर कल हमला किया गया। जनाब स्पीकर, ये बात किसी मुहज़्ज़ब माशरे में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और बिलियन ट्री के झूठे नारे लगाने वालों ने किस तरह कल दरख्तों को यहाँ पर जड़ों से काटा, पौधों को काटा, उनको मसल दिया गया। जी आग लगाई, जलाया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये है वो सवाल जनाब स्पीकर जिस तरफ न सिर्फ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ बड़े अदब से, बल्कि आज इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट को इसका जवाब देना है कि क्या हमने तखरीब की तरफ जाना है या तामीर की तरफ जाना है, पाकिस्तान को बनाना है या खुदा न खास्ता पाकिस्तान को बिगाड़ना है, बेवा और यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखना है या फिर उनको अल्लाह के सहारे और अवाम के जो अंधे थपेड़े हैं जो इस दुनिया के, उनके हवाले करना है। अल्लाह ताला तो हर एक का मालिक है, लेकिन उसी का हुक्म है कि दानिश से काम लो, हिकमत से काम लो, अकल से काम लो। ये तो फैसला हमने करना है कि मस्जिद की तरफ जाना है या जिस तरह मौलाना साहब आज फरमा रहे थे, या फिर एक खुदा न खास्ता कहवा खाने में जाना है। ये तो फैसला हमारी अकल और दानिश ने करना है। तो क्या हमने तबाही का रास्ता इख्तियार करना है या हमने पाकिस्तान को बनाने का रास्ता इख्तियार करना है? जनाब स्पीकर, मैं इस मौके के ऊपर इस्लामाबाद की पुलिस, रेंजर्स, एफसी, ट्रैफिक पुलिस इंतज़ामिया और तमाम उन लोगों को और इदारों को जिन्होंने कल इस गैर आइनी और इन जत्थों को रोकने के लिए और पाकिस्तान के बच्चों और बच्चियों और माँओं और बेटों और बुज़ुर्गों को बचाने के लिए, उनकी इमलाक को बचाने के लिए जो उन्होंने कल फ़राइज़ इंतहाई ईमानदारी से अदा किए, मैं उन सबको अपने इस पूरे ऐवान को तरफ से उनको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। और लाहौर में वो शहीद सिपाही, उनको पूरा ऐवान उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको, कुरान करीम इस बात की जगह जगह फरमाता है कि इनको मुर्दा मत कहो, ये जिंदा हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उस अजीम सिपाही के दर्जात बुलंद करे। और जनाब स्पीकर, उनके घर वालों से ताज़ीद करना एक सुन्नत भी है, एक फ़र्ज़ भी है, रिवाज भी है, समाज समाज भी है। लेकिन कौन उन बच्चों और बेवा को जनाब स्पीकर ये तसल्ली देगा कि हमारे अब्बू कब वापस आएंगे, माँ मेरा बाप कहाँ चला गया, कब वापस आएगा? ये है वो दास्तान, दिलखराश दास्तान। और उम्रें गुजर जाएंगी, वो बच्चे और बेटियाँ और वो बेवा अपने खामन को और वो बच्चे अपने वालिद को भूलेंगे नहीं। और फिर उसके ऊपर ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कना, इससे बड़ी जुल्म और ज़्यादती की बात जनाब स्पीकर नहीं हो सकती। मैं आज उस शहीद के लिए भी वफाक की तरफ से और जो हमारे लाइन ऑफ ड्यूटी में जो लोग बच्चे बेटे हमारे ज़ख्मी हुए हैं, उनके लिए मैं वफाक की तरफ से एक पैकेज का ऐलान करता हूं ताकि इनका हौसला बढ़े,
इनकी हौसला, बड़े इनको हिम्मत हो कि हर अच्छे काम के लिए हुकूमत वक्त उनकी पुष्ट पर है। जनाब स्पीकर, शहीदों के जाने का दुख, उनके अहल खाना से हम सब ताज़ियत करते रहेंगे, दुआ भी करते रहेंगे। मेट्रोस की तामीर भी फिर हो जाएगी। हमने पहले भी तामीर की थी, इन्होंने तखरीब की, फिर हम तामीर करते जाएंगे। जितनी बार ये जलाएंगे हम उसको दोबारा बनाते रहेंगे। लेकिन ये सफ़र कब तक, ये मजाक कब तक, ये मेरा वतन, ये मेरे वतन के 22 करोड़ अवाम कब तक इस संगीन मजाक को ये झेलते रहेंगे। जनाब स्पीकर, ये है वो सवाल, चुपता हुआ सवाल, जिसका जवाब आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने देना है। जनाब स्पीकर, आपको याद है, ये कोई बहुत माजी बईद की बात नहीं, माजी करीब की बात है, जब दहशतगर्दी के हाथों इस कौम के हज़ारों नौजवान, आज भी जब आप किसी सड़क पे जाते हैं तो कोई अगर बेचारा वो माजूर है तो शायद कि उसको दहशतगर्दी के ज़माने में किसी दहशतगर्द ने बम फेंका, उसकी टांग उसकी टूट गई, कट गई। अगर कहीं कोई माँ अगर अपना बिस्तरे मर्ग पर दराज है तो वो इलाज ना करा सकी, इसलिए कि दहशतगर्दी के अंधे थपेड़ों के हवाले उसको कर तो दिया गया, लेकिन घर वालों पे इलाज के इतने वसाइल नहीं थे। ये हैं वो अजीम कुर्बानियाँ जनाब स्पीकर, हज़ारों पाकिस्तानियों ने दी हैं, सिपाहियों ने दी हैं, पुलिस के अफवाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों और उनके बेटों ने दी है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने दी हैं, पूरे चारों सूबों के अवाम ने दी हैं, और सबसे बढ़कर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दी हैं, जो कि एक फ्रंट लाइन के तौर पर ये जंग लड़ता रहा दहशतगर्दी की। तो आज उसके बाद पेशावर में जहाद के नारे लगाए जाएं। जनाब स्पीकर, जहाद किसके खिलाफ? हिंदुस्तान के खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ, किसके खिलाफ जहाद के नारे लगाए गए? जनाब स्पीकर, यह है वो सवाल। अगर इसका जवाब इस कौम को ना मिला और इस ऐवान ने ना दिया तो फिर खुदा न खास्ता हमारी जो डायरेक्शन जो है हमेशा के लिए तब्दील हो सकती है। जनाब स्पीकर, ये वहां पर पेशावर में जहाद के नारे लगाए गए और मजहब को जाती मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, इससे बड़ा कभी और कोई फेल हो नहीं सकता। इस फेल का जितनी शिद्दत से ये ऐवान उसकी मजम्मत करे जनाब स्पीकर, वो कम होगी। मैं चाहूँगा कि आज इस बात के खिलाफ और कल के वाक़यात के खिलाफ ये ऐवान एक करारदाद मंजूर करे, इसकी भरपूर मजम्मत करे और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई भी हुकूमत हो उसको पूरा इख्तियार दे कि वो अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए वो भरपूर आगे बढ़े। और जनाब स्पीकर, मैं वक्त की किल्लत को बिल्कुल समझता हूँ। जनाब स्पीकर, जॉइंट सेशन भी है, मैं अपनी बात को मैं बहुत करीब ले आता हूँ ताकि जॉइंट सेशन के ऊपर ये इजलास जो है वो रुकावट ना बने। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर मोहतरम अजीम मुजाहिद यासिन मलिक की भी बात करना चाहता हूँ। और देखिए, शूमी किस्मत, कल 25 तारीख को यहाँ पर गिराओ जलाओ की तहरीक हो रही थी और इमरान नियाजी हर चीज से बेपरवाह होकर कि किस तरह उसने अपने दौर के आखिरी दिनों में सब्सिडी न होने के बावजूद, वसाइल न होने के बावजूद तेल और पेट्रोल की कीमतें जो आज दुनिया भर में आसमानों से बातें कर रही हैं, उसकी कीमतें कम करके हमारे लिए एक बारूदी सुरंग बिछा गया ताकि जब ये आएंगे तो इनको अगर कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी तो मैं 25 तारीख को इसका एक और मैं शोशा छोड़ूंगा
कि देखो मैंने तो कीमतें कम की थी और इन्होंने बढ़ा दी। जनाब स्पीकर, सवाल ये पैदा होता है कि इस इमरान नियाजी को ये क्यों तौफीक न हुई कि पिछले 3.5 सालों में किसी गरीब के मुंह में नवाला डाल देता, किसी के लिए दाल सस्ती करता, किसी के लिए आटा सस्ती करता। इसने, मैं बिला खौफ तरदीद आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि जहां पर अस्पतालों में पाकिस्तान में दवाइयां मुफ्त मिलती थी, इसने बंद कर दी। जहां पर इलाज मुफ्त मिलता था, इसने बंद कर दी। जहां पर एक्सरे फ्री थे, इसने बंद कर दिया। PKLI को तबाह कर दिया। और जनाब स्पीकर, जो हेपेटाइटिस के लाखों मरीज हैं इस मुल्क में, वहां पर फ्री इलाज था, उसको बंद कर दिया, जिंदगी तंग कर दी। मैं समझता हूं कि इसके बाद भी कोई आपको सबूत चाहिए कि ये शख्स असल में ये अपने लवादे में पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का दुश्मन है, उसका साथी नहीं है। ये यही वजह है कि जानते सब अगर एक अकल का अंधा भी जानता था कि 25 तारीख को यासिन मलिक की किस्मत का फैसला हिंदुस्तान के जो जाबर हैं, जालिम हैं, उन्होंने करना है, तो फिर अगर कश्मीरियों का इतना एहसास था और कश्मीर की वादियों में गिरने वाला खून, दिन रात गिरने वाला खून, उसका अगर इतना एहतराम था, तो कल फिर कम से कम इस दिन के हवाले से कोई और दिन चुन लेता। परवाह नहीं थी कश्मीरियों की, सब झूठ, सब झूठ, कोई परवाह नहीं थी उनकी, उन शहीदियों की कोई परवाह नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी, कोई एहसास है। पत्थर दिल, पत्थर दिल। जो शख्स, और मैं ये हकायक पर मबनी बात कर रहा हूं जनाब स्पीकर, मुझे आदत नहीं है कि मैं एग्जेजरेट करूं या खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात करूं जिसका मुझे शर्मसारी हो। इंसान है, गलती तो हम सबसे होती है। वो शख्स जो इनकी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, मैं आपको ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि आप मेरी गुजारिश को करीब से समझ सकें। उनका नाम था हक साहब, क्या नाम था उनका? नईमुल हक। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस पार्टी। यहाँ स्पीकर, उनका कराची में इंतकाल हो गया, ये उनके जनाजे पे नहीं गए। अगर वक्त नहीं था, मिला गाली गलोच के अलावा, क्योंकि दिन रात गाली गलोच करते थे, वक्त नहीं मिला था तो घर जाकर कहीं फातिहा कह लेते, ये वहाँ नहीं गए। जिस शख्स का ये आलम हो कि इतना पत्थर दिल हो कि परवाह तक न हो एक ऐसे साथी की जिसने PTI की बुनियादें रखी, उसकी बुनियाद में सीमेंट डाला, गारा डाला, तो कश्मीरियों की ये किस तरह परवाह करेगा? अगर ये वाकई PTI के लीडर था और पाकिस्तान की इज्जत वकार इसको बहुत अपना अहम था, तो फिर कल यासिन मलिक के हवाले से पिछले 5 दिन से ये शोर पूरी दुनिया में मच रहा था कि उसको नाजायज सजा दी जाएगी। इसने जानबूझ के ये दिन रखा कि मुझे क्या परवाह इन कश्मीरियों की, मैंने पाकिस्तान में आग लगानी है खुदा न खास्ता और जलाओ घराव करना है, कुछ हो जाए मैं इसे बाज नहीं आऊँगा। ये है वो मेंटेलिटी, ये है वो एक इंतहाई कभी सोच, पस्त सोच, जिसने पाकिस्तान को आज तबाही के दहाने पर नहीं, खुदा न खास्ता बिल्कुल तबाही के दहाने लगा दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जनाब स्पीकर, यासिन मलिक के हवाले से मैं बात कर रहा था कि वो एक अजीम माँ का एक अजीम बेटा है, और आज ये पूरा ऐवान, कल जो सज़ा दी गई नाजायज़ यासिन मलिक को, पूरा अवान एक आवाज़ के साथ उसकी भरपूर मजम्मत करता है। और रावलपिंडी में उनकी अहलिया और उनके बच्चों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं कि जब तक हमारे जिस्म में सांस है, जान है, खून दौड़ रहा है, हम यासिन मलिक के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक उनकी हक़ खुद इरादियत के लिए हम इंशाअल्लाह हमेशा पाकिस्तान का 22 करोड़ कुंबा उनके लिए साथ खड़ा होगा और शाना बशाना उनकी आवाज़ में आवाज़ बनाएगा। जनाब स्पीकर, मैं
मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप मुझे इशारतन ये बात कर रहे हैं। यहाँ स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान यकीनन ख़तरात में मंडला रहा है। और अगर बात इलेक्शन की थी, जिस तरह मैंने कहा, तो फिर ये ऐवान में आते। जनाब स्पीकर, मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी, ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा, ये ऐवान फैसला करेगा। और जब तक ये कोलिशन गवर्नमेंट चाहेगी, हम दिन रात मेहनत करके मसाइल को हल करेंगे। इस हुकूमत की जो मियाद 1 साल 2 महीने है, इमरान खान न्याजी, किसी भूल में न रहना। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। बातचीत करना ये सियासतदानों का सबसे आला ज़र्फ़ होता है, सबसे शानदार टूल होता है, हथियार होता है। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे, तो अपने घर में दो। इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। और इंशाअल्लाह जनाब स्पीकर, मैं ये बात डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि मुश्किलात बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये हम पुरज़म हैं। खुदा ताला के फज़ल करम से हम में हिम्मत है, जान है। हम जान लड़ा देंगे पाकिस्तान को अजीम बनाने के लिए। हम अपना खून पसीना बहाएंगे पाकिस्तान को एक अज़मत वाला मुल्क बनाने के लिए। हम हर चीज़ कर गुजरेंगे। हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, मेहनत के साथ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को उनका खोया हुआ मुकाम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान को हमेशा अल्लाह ताला सलामत रखेगा। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। और आखिरी शेयर करना चाहता हूँ जो कि आज के इस मौके के लिए इंतहाई रेलिवेंट है, वो ये है क्योंकि मुश्किलात बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। और जुल्म बच्चे जल रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। ऐवान की कार्रवाई बरोज़ जुम्मा 27 मई 2022 दोपहर 11 बजे तक मुलतवी की जाती है।